In this module, we shall explain kernel of a homomorphism geometrically. Let's recall the theorem. Let H be a homomorphism from a group G into group G prime. Let K be the kernel of H. और कर्नल ऑफ एच को हम रिकॉल कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर मैपिंग ऑन द आइडेंटिटी ऑफ जी प्राइम. देन ए के इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू जी such that hx equal to ha. Set of all those elements of G which satisfied the following equation hx equal to ha. कि H के अंडर H होमोमॉर्फिज्म है जो X की इमेज और A की इमेज इक्वल आए, वो तमाम सेट्स G को बिलोंग कर रहे हैं. इस सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो A K को बिलोंग कर रहे हैं. एंड इट कैन बी रिटन एज H इनवर्स H A and also Ka equal to x belonging to G such that Hx equal to Ha, and the pre-image of set of all the pre-images of Ha. It also can be written in this way. And here you can see that Ak equal to Ka. K is the normal group. Let K equal to care of H for a homomorphism H G to G prime. We think of H as collapsing K down onto E prime. Above theorem shows that for G belonging to G, the cosets GK and KG are the same. तो आपने ऊपर वाले थ्योरम में देखा कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट हमारे पास सेम आ रहे थे और के जो है वो कोलैप्स हो रहा है ई प्राइम के ऊपर अंडर द मैप एच, क्योंकि हम के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि जी प्राइम के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं एंड आर कोलैप्स्ड ऑन टू द सिंगल एलिमेंट एच जी by H. That is H inverse Hg equal to Gk equal to Kg. और थ्योरम के अंदर जो कंडीशन हमने देखी थी उसमें हमने देखा था कि Hg equal to H E prime, Hx equal to Ha थ्योरम के अंदर जो कंडीशन थी, और यहाँ x जो है वो g का एलिमेंट है और hx a भी कोई g का एलिमेंट है. तो अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है तो थ्योरम के अंदर हमने ये देखा था कि a के अंदर लेफ्ट कोसेट के अंदर एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे g के जो कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. Now we have attempted to symbolize this collapsing in figure below, where the shaded rectangle represents G, the solid vertical line segments represents the coset of care H, and the horizontal line at the bottom represents G prime. In this figure you can see that A dash is the element of G prime, and in G prime we have this is G prime is the quotient group G over K, and K is the kernel of H. The pre-image of A prime is H inverse singleton A prime, and the pre-image of HB is the coset BK, and in the diagram you can see that the cosets are these lines representing the lines, and the B is the representative in the class BK. BK is the coset and it is contained in G. And the pre-image of E prime is the kernel K,
And you can see that kernel K is collapsing on E prime. And E is the identity element of kernel, which is the representative in the class K. And here we have all the cosets in G, and these disjoint cosets form a partition of G. By Lagrange theorem, you have seen all this. And the pre-image of Hx is the coset left. Here we are considering left cosets xk. Similarly, you can considering right coset, left cosets also form the partition for the group G, and as well right cosets also form the partition from group G. And the pre-image of y dash is H inverse singleton y dash. We view H as projecting the elements of G which are in the shaded rectangle straight down onto the elements of G prime, which are on the horizontal line segment at the bottom. Notice the downward arrow labeled H at the left, starting at G and ending at G prime. Elements of K equal to K H thus lie on the solid vertical line segment in the shaded box lying over E prime, as labeled at the top of the figure.